ओके स्टूडेंट, स्टेप 1-2 की बारी है। इसमें नंबर ऑफ कैटाइंस जो हैं वो 8 हैं और नंबर ऑफ एनाइंस 7 है। आप टोटल फॉर्मूला जो है वो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 है 56, तो वो 56 केमिकल फार्मूलाज बनेंगे। एक्स पर +1 मोनोवेलेंट की वैलेंसी और वाई पर -2 आ जाएगी। अब इन वैलेंसी को एक्स और वाई के नीचे सफिक्स के तौर पर शिफ्ट कर दें और ये रेशियो 2 और 1 आएगी और इसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा x2y। Okay students, since for step 1-2 the general formula is x2y. So for the cations you have to write suffix 2 and for the anions the suffix is 1, that is neglected. When hydrogen combines with oxygen it will give you H2O. This is water. H2, H2S, hydrogen sulfide. H2CO3, carbonic acid. H2SO4, sulfuric acid. Next is A3PO4, phosphoric acid. H2C2O3, hydrogen oxalate. H2S2O3, hydrogen thiosulfate. Next is lithium. Li2O, lithium oxide. Li2S, lithium sulfide. Li2CO3, lithium carbonate. Li2SO4, lithium sulfate. Li2HPO4, lithium biphosphate. Li2C2O3, lithium oxalate. Li2S2O3, lithium thiosulfate. For sodium you will write Na2O, sodium oxide. Na2S, sodium sulfide. Na2CO3, sodium carbonate, well known compound. Na2SO4, sodium phosphate, a well known compound. Na2HPO4, sodium biphosphate or sodium hydrogen phosphate, lithium hydrogen phosphate. Both chemical names are used. Okay, Na2C2O3, sodium oxalate. Na2S2O3, sodium thiosulfate. For potassium, K2O, potassium oxide. K2S, potassium sulfide. K2CO3, potassium carbonate. K2SO4, potassium phosphate. K2HPO4, potassium biphosphate or potassium hydrophosphate. K2C2O3, potassium oxalate. K2S2O3, potassium thiosulfate. For silver you will get Ag2O, silver oxide. Ag2S, silver sulfide. Ag2CO3, silver carbonate. Ag2SO4, silver sulfate.
Ag2 HPO4, silver biphosphate. Ag2 C2O3, silver oxalate. Ag2 S2O3, silver thiosulfate. For cuprous, Cu2O, cuprous oxide. Cu2S, cuprous sulfide. Cu2CO3, cuprous carbonate. Cu2SO4, cuprous sulfate. Cu2HPO4, cuprous biphosphate. Cu2C2O3, cuprous oxalate. Cu2S2O3, cuprous thiosulfate. For mercurous, Ag2O, mercurous oxide. Hg2S, mercurous sulfide. Hg2CO3, mercurous carbonate. Hg2SO4, mercurous sulfate. Ag2HPO4, mercurous biphosphate. Hg2C2O3, mercurous oxalate. Hg2S2O3, mercurous thiosulfate. Now ammonium. This is a complicated ion. Since it contains nitrogen and hydrogen, so you will write not 2 but the twice number will come. For the formula X2Y, the twice will come because it contains nitrogen and hydrogen, 2 elements. Okay, continuing. Ammonium, NH4 twice O, ammonium oxide, NH4 twice S, ammonium sulfide, NH4 twice CO3, ammonium carbonate, NH4 twice SO4, ammonium sulfate, NH4 twice HPO4, ammonium biphosphate, NH4 twice C2O3, ammonium oxalate, NH4 twice S2O3, अमोनियम थायोसल्फेट। जी स्टूडेंट, तो स्टेप 1 2 कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद अब हमने नेक्स्ट वीडियो करनी है स्टेप 1 3 की। तो आप उसको स्टेप 1 3 को नेक्स्ट वीडियो को स्टडी करेंगे। ओके।